by flow of fluid. So flow of fluid means movement of fluid from one point to the another point, or motion of fluid from one point to the another. So in technical word, flow of fluid may be defined as the flow of substances that do not permanently resist the distortion. That is nothing but the flow of. So in simple language, flow of fluid means a movement of fluid from one point to another point. Okay, that's it. Or motion of fluid from one point to another. But what do you mean by fluid itself? So fluid is nothing but it is a two-phase system. So there will be either gases, that is known as a fluid. There will be either solid gas. So that is nothing but the solid fluid. That's it. Liquid fluid, solid fluid. So fluid means there is a two phase. Okay. So either liquid or gases, or solid or gases. That is nothing but the fluid. Okay. So it may be defined as the flow of substances that do not permanently resist the distortion. अगर distortion resist करता है तो उसको बोलते हैं rheology. Fluid flow may be defined as the flow of substances that do not permanently resist the distortion. Now there are two types. So either you have to deal with fluid static or you have to deal with fluid dynamics. So if the fluid is on a rest, एक जगह पे ही है fluid. So fluid statics deals with the fluid at rest in equilibrium. The study of fluid at rest in equilibrium is a fluid static, whereas the fluid dynamics deals with the fluid in the motion. That's it. So there is one term, manometers. Manometers are the devices that are used for the measuring the pressure difference or pressure differential. Okay, so manometers are used for the measurement of pressure differential, and this was question in GPAT 20. So you have to remember, manometer is the device that is used for the measurement of pressure differential. कि एक पॉइंट पे कितना प्रेशर है या फिर दूसरे पॉइंट पे कितना है, या फिर कोई लिक्विड है वहां पे तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, उसको बोलते वो डिवाइस जो है उसके मेजर करने के लिए डिवाइस जो होता है उसको बोलते हैं मैनोमीटर. मैनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है जो मेजर करता है प्रेशर डिफरेंस. राइट. सो इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं मैनोमीटर्स के. वी विल डिस्कस इट. सो सिंपल मैनोमीटर they are mostly used and helps in measuring the function of gases or pressure of measuring the pressure of gases in chemical reaction, and it is used along with the flow meter for the measurement of flow of the fluid. Okay, so simple manometer. Second type is differential manometer. Okay, there are three types of manometer: simple manometer, differential manometer, and inclined manometers. So simple manometer, we have seen it's mostly used and helps in the measuring the function of gases in chemical reaction, and used along with the flow meter for the measurement of flow of fluids. Okay, in case of differential manometer, as the name indicates, differential means it can differentiate. Simple manometer, they are used to measure the pressure at one point only. Okay, they are used to measure the pressure at a one point only. So if there are 2 points, there are two different pressures, then that can be measured by differential manometer. It is also known as U-tube manometer, two fluid U-tube manometer. It is occasionally used, suitable for the measurement of small pressure differences. So this was also a question. So which manometer is used to measure the small pressure differences? So it is nothing but the differential manometer. They are sensitive devices and useful for the measuring of even small gas pressure. That is known as a pressure head. Then inclined manometer. There are three types of manometer: simple, differential, and inclined. So inclined manometers are very rarely used, and they are limited. They have limited applications. Now, fluid dynamics. Fluid statics means what? Fluid at rest or fluid at a rest in equilibrium. That is nothing but the fluid statics. What is mean of fluid dynamics? So fluid dynamics deals with the fluid in a motion. That is fluid dynamics. Now there is one law known as the Reynolds number. Osmerk-Reynolds in 1835 has studied a study that is known as the Reynolds study. I will explain it. Before that, there are two terms: laminar flow and turbulent flow. Okay, laminar flow is also known as viscous flow or streamline flow. Suppose that आपके पास एक पाइप है और वो पाइप में कोई फ्लूइड आपको बह रहा है, कोई फ्लो हो रहा है. अगर वो फ्लूइड एक ही प्लेन में मूव हो रहा है, if that fluid is flowing in a one plane or in a one layer or in a lamina, that is known as a laminar flow. Okay,
So laminar flow, viscous fluid or streamline flow means what? Flow of fluid particles in which the particles moves, the flow of fluid in which the particles moves in a layer or in a laminar with one layer sliding with other layer. Okay, so there is no physical mixing in case of laminar flow. Just remember, laminar flow, they will move in a laminar, they will move in a layer, there will be no mixing, right? So it is known as a laminar flow, viscous flow or streamline flow. Okay, now this happens with the low pressure. अगर प्रेशर लो है, ठीक है, लो प्रेशर में वो स्मूथली बहेगा, स्मूथली एक लाइन में चलेगा. ओके, अगर प्रेशर इंक्रीज किया आपने, हाई प्रेशर से अगर उसको फ्लो कर दिया, फ्लो का प्रेशर इंक्रीज किया, तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा. नाउ टर्बुलेंट, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ increased, velocity of flow of fluid is increased, all fluid particles will get disturbed and they get mixed up. Okay, mix up with each other, and there is a continuous transfer of momentum to each adjacent layer, and there is a diffusement, there is diffusion. Okay, diffusion of particles from one layer to the different to other layer, means there is a mixing. Okay, and this type of flow is known as a turbulent flow. So there are two type of flow: laminar flow, it is also known as viscous flow or streamline flow, and then second one is the turbulent. That clear? Now critical velocity. So average velocity of any fluid, average velocity of any fluid at which the viscous flow changes to turbulent flow or the laminar flow changes to turbulent flow. So critical velocity means average velocity of any fluid at which there is a change from laminar flow to the turbulent. Is that clear? Now Reynolds number. So Reynolds number is equal to this dimension of your pipe, this kinematic viscosity, then this density, and this is viscosity. I will explain this in the book also. So Reynolds number will also be stated, that is interstitial forces divided by viscous forces. उसका जो इक्वेशन वगैरह जो है वो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन, वो ये एक पॉइंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा प्रेशर है. वो प्रेशर किसकी वजह से हुए? मास है उसका, डेंसिटी है, ठीक है, उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी है उसका, ठीक है ना. तो ये सब चीजें मिला के डेरिवेशन बनता है उसका, आप देख लीजिए. वो डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर GPAT. So what is important for GPAT Niper? So whatever these terms, laminar flow, turbulent flow, critical velocity is particularly important. Then manometer, their use. Then Reynolds number, there is one chart. If Reynolds number is below less than 2000, then what type of flow will be there? If Reynolds number is more than 4000, what type of flow will be there? This is important. Okay, so ये जो flow of fluid है उसमें से एक आधा क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता. तो उसमें क्या क्वेश्चन आता है वो इस चार्ट में. Reynolds number and type of flow. If a fluid has a Reynolds number less than 2000, it is known as it will have a laminar flow. If Reynolds number is more than 4000, it will have a turbulent flow. And if Reynolds number of fluid is between 2000 to 400, that means the fluid is changing from laminar flow to turbulent flow. इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था. There was a once question from this chart in the GPAT. नाइपर में तो हर साल ऐसा क्वेश्चन आता है. नाइपर में one line क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बट GPAT में एक बार क्वेश्चन आया था इसमें का. So if the Reynolds number of fluid is less than 2000, then it is known as a laminar flow. Okay, the fluid will have a laminar flow. If Reynolds number is more than 4000, then that fluid is flowing turbulently. That will have a turbulent flow. If it is between 2000 to 400, that means flow is changing from laminar to the turbulent. Is that clear? Now applications of Reynolds number. What are applications? So to predict the nature of flow, then physical stability of suspension emulsion, then flow rate of heat transfer. So these are the applications of Reynolds. Now Bernoulli's theorem. This is also one important. When principle of energy conservation is applied to the flow of fluid, there is a result of one equation known as a Bernoulli's theorem. So what is the statement of Bernoulli's theorem? So Bernoulli's theorem states that steady state ideal flow of an incompressible fluid. This is a Bernoulli's theorem. Steady state ideal flow of an incompressible fluid. The total energy per unit mass, which consists of pressure energy, kinetic energy, and datum energy at any point of the fluid is constant. मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर स्टेडी स्टेट फ्लो है, मतलब लैमिनार फ्लो है, तो उसमें क्या होगा, जो अगर लैमिनार फ्लो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का,
उसमें जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास, जो जितना एनर्जी है टोटल यूनिट पर यूनिट मास, ओके, जो टोटल एनर्जी है उसमें क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रहेगा, प्रेशर एनर्जी रहेगा, डेटा एनर्जी रहेगा. सो एट एनी पॉइंट of the fluid it is a constant, means total energy per unit mass of the fluid is constant if that the flow is steady state ideal flow. Okay, that is nothing but the Bernoulli's theorem. So the Bernoulli is going to say that the total energy per unit mass of a fluid ideal flow or ideal flow, if the fluid is incompressible and it is having steady state flow, then the total energy per unit mass will remain constant at any point. So total energy is nothing but the all energy comprising of pressure energy, kinetic energy, then your data energy. That's it. What are the applications of this Bernoulli's theorem? So this theorem is applicable for measurement of flow rate and fluid flow using orifice meter or Venturi meter. So these are nothing but these are the part of measurement of fluid. So measurement of fluid flow. So devices used for the measurement of fluid flow is nothing but orifice meter, Venturi meter. There are another device also. It is also applied for working of centrifugal pumps. जितने भी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, जैसे आपका मोटर पंप हुआ है, मोटर पंप क्या करता है, आपको वाटर लिफ्ट करता है ना, तो उसमें एक पार्ट होता है जो जिसको अपन बोलते हैं, जिसको जो मोटर को जो शाफ्ट घुमाता है वो पार्ट को घुमाता है, और वो पार्ट में सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट होता है, मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट. तो वो क्या करता है, वाटर को सक कर लेता है, पंप वहां से वाटर को खींच लेता है, और वही खींचने के बाद जो एनर्जी बचती है काइनेटिक एनर्जी, वही काइनेटिक एनर्जी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो जो पानी है वो आपको मिलता है प्रेशर से, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल. सो प्रेशर हेड इज डिपेंड एज द हाइट ऑफ कॉलम. Pressure head is dependent as the height of column in the liquid of non-density, which is numerically equal to the pressure term. Energy losses. There are different energy losses in the flow of fluid. While you are transporting any liquid, while you are transporting any for example, जैसे आप इंडस्ट्री में आपका इंजेक्शन बना रहे हो, इंजेक्शन में आपको क्या करना है कि एक बैच बनाया आपने इंजेक्शन का, तो वहाँ पे जो स्टोरेज टैंक है वहाँ पे बनाया आपने इंजेक्शन का, ठीक है, तो स्टोरेज टैंक में स्टोरेज किया, लेकिन उसके बाद में उसको क्या करना है, वाइल्स में भरना है या फिर एम्पुल्स में भरना है या फिर आपका बॉटल में भरना है ना सलाइन के, तो वो जो बॉटल में भरना है तो वो ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, वो जो ट्रांसपोर्ट करना है तो वो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म जो होता है दैट इज नथिंग बट द फ्लूइड फ्लो, दैट इज एप्लीकेबल, फ्लूइड फ्लो इज एप्लीकेबल ओवर देयर. सो जहाँ पे भी आपका लिक्विड का ट्रांसपोर्ट आ रहा है, जहाँ पे आपका फिलिंग आ रहा है, जो भी फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन में आपका फिलिंग आ रहा है, जहाँ लिक्विड फिल कर रहे हो आप, है ना, जैसे आप कोई शैम्पू फिल कर रहे हो, जैसे आप कोई सोल्यूशन सिरप बना रहे हो, सिरप का फिलिंग है, या सिरप का आपने सिरप बना के रखा है टैंक में, लेकिन वो तो प्रोडक्शन एरिया है, लेकिन पैकेजिंग एरिया में आपको क्या करना है, फिलिंग करना है, फिलिंग एरिया में, तो वहां तक लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंट पंप यूज करने पड़ेंगे, डिफरेंट पाइपलाइन यूज करना पड़ेगा, डिफरेंट वाल्व यूज करना पड़ेगा. तो उसके पीछे जो थ्योरी है उसको बोलते हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है. तो वो जो ट्रांसपोर्ट करने का है, जो वाल्व्स कितने होंगे या पंप्स कितने टाइप के होंगे, पिस्टन पंप क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. That is known as the transportation of fluid. Okay, so this is just a fluid mechanics. It is all a part of engineering. So इसमें देखिए दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर क्वेश्चन आएगा. That's it. Then what are the losses, energy losses during flow of fluid through a pipe? So there are different losses, frictional losses, then there are pitting losses, then there are enlargement losses, then there are constriction losses. So one by one. Friction losses means what? So again Pauli equation, viscous is for viscous flow, is employed for calculating the pressure drop due to friction. So if there is a uneven surface in the pipe, so there what will happen there? There will happen a friction of your fluid with that uneven surface of your pipe. So that viscous flow, that Hagen and Pauli equation is related with the frictional losses in the pipe that is flowing through fluid flowing through a pipe. So it may be frictional losses, then it may be a
fitting losses. So losses due to changing in the direction like elbow fitting, coupling, unions, walls. जैसे होता है ना, आपने अगर आपके यहाँ पे ड्रेन डाला है आपने खेती, जो फार्मर्स है उनको मालूम होगा। जैसे आपने पाइपलाइन डाला है, पाइपलाइन में एल्बो एल्बो होता है, एल्बो एल्बो टाइप का जॉइंट होता है, या फिर वहाँ पे टी टाइप का जॉइंट होता है। तो उसमें जहाँ पे वो प्रेशर ड्रॉप होता है, तो जो लॉस होता है एनर्जी का, उसको बोलते हैं फिटिंग लॉसेस। सो लॉसेस ड्यू टू चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जहाँ पे एल्बो है, जहाँ पे टी है, बेंड है जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा आपका फ्लूइड का, तो उस डायरेक्शन में जो लॉस होता है एनर्जी का, तो उसको बोलते हैं फिटिंग लॉसेस। ओके, देन एनलार्जमेंट लॉसेस, सडन एनलार्जमेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ पाइप। कि आपने एक पाइप का 3 इंच का पाइप लगाया है और ये आगे जाके उसको उसको 5 इंच का पाइप अटैच किया है, तो सडन एनलार्जमेंट ऑफ पाइप हो गया, तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा। जो 3 इंच पाइप में जो प्रेशर मिल रहा है आपको वाटर का, वो 5 इंच में नहीं मिलेगा, तो उसको बोलते हैं एनलार्जमेंट लॉसेस। सो देयर विल बी pressure drop sudden because of sudden enlargement of dimension of pipe. Contraction losses, sudden contraction of pipe. अगर मान लीजिए कि आपने पाइपलाइन डाला है 5 इंच का, ठीक है, और बाद में जाके आप क्या करोगे, उसको 3 इंच का पाइप लगा दोगे, तो वहां पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, देयर विल बी प्रेशर इंक्रीज। उस टाइप का जो लॉस होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन लॉस। आई विल शो यू। सो मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो. So rate of fluid flow is measured by different direct weighing or measuring is there, and hydrodynamic methods are there. For hydrodynamic method, orifice meter is there, Venturi meter is there, pitot tube is there, and rotometer is there. For direct displacement meter is there as okay. Then again direct displacement meter. There are 3 methods for measurement of rate of fluid or flow of fluid. So direct weighing measurement, weighing or measuring means मतलब क्या कि कितना अमाउंट वेलोसिटी उसमें एक आएगा, आपका मास आएगा, वेलोसिटी आएगा। कि रेट मतलब क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ योर फ्लूइड फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विथ रिस्पेक्टिव टाइम, दैट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो रेट। ओके, सो विथ द रिस्पेक्टिव टाइम, कि वो टाइम रिस्पेक्टिव कितने टाइम में कितना यहाँ पे फ्लो हो रहा है, उसका रेट निकालना है, फ्लूइड फ्लो रेट, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। सो फ्लो ऑफ फ्लूइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। सो इट कैन बी मेजर्ड बाय डिफरेंट डायरेक्ट वेइंग, कि आप डायरेक्टली वे कर सकते हो, इतना वेट है उसका, तो यहाँ तो इसका हाइट कितना है, इतना लेंथ कितना है, उसके बाद उसका उसमें कितना मोल है, विस्कोसिटी कितना है, उसका डेंसिटी कितना है, उसके ऊपर आप कर सकते हो कितना रेट है। तो डायरेक्ट वेइंग एंड मेजरिंग इन हाइड्रोडायनामिक मेथड, तो ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पाइटोट ट्यूब, रोटामीटर, direct displacement. Hydrodynamic methods. Okay, so these hydrodynamic methods again elaborated over here. So type of instrument and here special comment. It is a chart is given in the book. Actually, it is not much important. So you can, ये आपको मैं एक बार यहाँ पे दिखा, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। अगर आ गया बाय चांस तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, वो भी आएगा आपका रेनॉल्ड्स नंबर के ऊपर। रेनॉल्ड्स नंबर अगर लेस देन 2000 है तो उसमें कौन सा फ्लो होगा, उसमें होगा आपका लेमिनार फ्लो। ठीक है, अगर इफ रेनॉल्ड्स नंबर इज मोर देन 4000 उसमें होगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, अगर रेनॉल्ड्स नंबर इज इन बिटवीन 2000 to 4000 then that means the flow is changing from laminar to turbulent. Is that clear? तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपका, या फिर दूसरा क्वेश्चन वहाँ पे आएगा जो जैसे आपने मैंने बोला है एप्लीकेशंस ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, हैंडलिंग ऑफ लिक्विड, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल सच एज सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, सैंपलर, चिपबो। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ सॉलिड फ्लूइड। जो फ्लूइड स्टैटिक है, तो फ्लूइड एट रेस्ट, द फ्लूइड एट रेस्ट विल डील विद द फ्लूइड स्टैटिक्स, देन फ्लूइड इन द मोशन विल डील विद द फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एक टैंक है, इसमें टैंक में वाटर है। ठीक है, तो ये जो वाटर है वो क्लोज है, इसमें मतलब यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, इस डायग्राम में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे नहीं। ये रेस्टिंग टैंक है जो फील्ड है वाटर के साथ। नाउ एट दिस पॉइंट यहाँ पे एयर है, यहाँ पे लिक्विड है, तो हियर इज अ प्रेशर, हियर इज अ प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस के ऊपर प्रेशर है। ये यहाँ पे एक प्रेशर है, यहाँ पे जो प्रेशर है और ये पॉइंट पे जो प्रेशर है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे एयर प्रेशर इन यहाँ पे एयर प्रेशर दे रहा है किसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर। ठीक है, तो उसको एक प्रॉपर इसमें रेस्टिंग में रहने के लिए आपका जो सरफेस है यहाँ पे अलग से प्रेशर दे रहा है,
तो ये प्रेशर ये प्रेशर है, तो ये 2 पॉइंट जो है 1 एंड 2 उसके ऊपर भी अलग अलग प्रेशर होगा, ठीक है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डेंसिटी, विस्कोसिटी, मास, इसके बाद जो हाइट है इसके ऊपर, चेंज इन द हाइट, इसके ऊपर आप उसका प्रेशर मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक बार पढ़ लो आप, इजी है। दिस इज अ यू सिंपल मैनोमीटर, ओके। सपोज दैट दिस इज लिक्विड, दिस इज लिक्विड, this this is liquid A, this is liquid B, okay, and this is a one point. Here there is a pressure 1, there is a pressure 2. Difference in pressure differential is given by one equation. लेकिन ये important भी नहीं है, ठीक है। जितना important है उतना मैंने बोला है आपको, फिर भी आप एक बार पढ़ लो उसको। फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो that will deal with the fluid in motion। लेकिन इसमें एक बार क्वेश्चन आया था कि मैनोमीटर्स, so one of the following devices is used to measure the pressure differential, and there was a different option like manometer, thermometer, then pressure gauge, etc, etc. So manometer was the answer, and once there was a question on that Reynolds number, दो क्वेश्चन बनते, 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम बनते। Reynolds, this diagram will explain what you mean by turbulent flow, what you mean by your laminar flow, okay। You have two type of liquids, we have two type of liquids, okay। So here is a water and here is a colored water, right? So both are traveling in a this pipe, okay, both are traveling in this pipe. Now if the pressure is low, okay, if the pressure is low, then this colored liquid will travel in a particular plane, in a particular line, okay। So whatever dark line you are getting, you are seeing, that is nothing but the that is nothing but the laminar flow. That means the colored water is not mixing over here. So instead of mixing, it appears as a laminar or a line in a plane, okay। So that is nothing but the laminar flow or viscous fluid or streamline flow, right? But as you increases the pressure over here, so it become a turbulent. You can see here. So here is a mixed. So all liquid become colored. So that is known as a turbulent flow. This is a pipe. Two liquids are transporting in the fluid in the pipe. आप 2 लिक्विड पाइप में डाल रहे हो, तो अगर एक ये कलर वाटर है, कलर वाटर का डाल, इसका जब प्रेशर अगर लो रहेगा तो एक प्लेन में जाएगा, वो एक लाइन में जाएगा, उसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। अगर उसका प्रेशर बढ़ेगा तो वो मिक्सिंग हो जाएगा वहाँ पे। I will explain the Reynolds explains, because in this book Reynolds experiment is not given in good manner. दूसरा एक बुक है मेरे पास, उसमें Reynolds experiment अच्छे से है, उसमें एक्सप्लेन करने लायक है भी नहीं कुछ। Actually it is a part of little bit engineering, so that's why it is complete. ये Bernoulli's theorem जो मैंने बोला था, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। So what do you mean by Bernoulli's theorem? So it states that steady state ideal flow of an incompressible fluid, the total energy per unit mass, which consists of your pressure energy, kinetic energy and data energy, at any point will remain constant. Manometer means this is a construction of orifice meter. Suppose that यहाँ पे आपका लिक्विड जा रहा है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो इंटरनल डायमीटर है पाइप का वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कम रहेगा, तो यहाँ पे जो डायमीटर है आपका पाइप का वो क्या है, कम है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ओके। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट पे कितना प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंशियल कितना है, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे कितना डिफरेंस है प्रेशर का, दैट प्रेशर डिफरेंशियल इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर्स, ओके। एंड दिस इज अ ऑरिफाइस मीटर, ये पाइटॉट ट्यूब है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दूसरा बुक है उसमें आपको दिखा था वो रेनॉल्ड्स नंबर। So non-dimensional parameter called this is a non-dimensional parameter called Reynolds number, and it does not have any unit. It is a unitless. Okay, so Reynolds number is a unitless non-dimensional parameter. Okay, so it was discovered by Irish engineer and physicist known as Osborne Reynolds in 1883. He has identified the fundamental dimensions parameter that characterizes the behavior of known as a Reynolds number. ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं जाना पढ़ के कुछ फायदा नहीं आपको। Reynolds number is equal to dV rho divided by macro, dV divided by dV
macro divided by micron. So here d is the dimension of your pipe, p is the velocity, then re is the Reynolds numbers, then this rho is the this this rho is the this micro is the dynamic viscosity, and this rho is the density. Reynolds number is equal to diameter of your pipe, velocity of your fluid into the density of your liquid divided by dynamic viscosity of that liquid. ये नंबर ऐसे कैलकुलेट करते हैं. अगर उसका नंबर 2000 है, लेस देन 2000 है, तो उसको वो फ्लूइड का जो फ्लो है वो है लैमिनार. अगर उसका मोर देन 4000 है, उसका फ्लो है टर्बुलेंट. अगर इन बिटवीन है तो उसको बोलते हैं चेंजिंग फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट. नहीं, बाकी उसमें कुछ है नहीं. मे भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है उसमें. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड. वो देखने के बाद में उसमें भी कुछ नहीं जाता. बेसिक टाइप ऑफ पंप्स और टाइप्स ऑफ वाल्व जो है वो थोड़ा सा है इम्पोर्टेंट. सो इट वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन.